Irreversible cell injury. Two things characterize irreversibility, that is, mitochondrial dysfunction and membrane dysfunction. Two characteristics of irreversible cell injury is mitochondrial dysfunction and membrane dysfunction. Membrane dysfunction, persistent injurious stimuli के कारण it the membrane loses its selective permeability and there is increased cytosolic calcium. Membrane dysfunction के कारण membrane loses its selective permeability and the cytosolic calcium is increased. Persistent injurious stimuli के कारण the membrane loses its selective permeability, ठीक है, और साइटोसोलिक कैल्शियम लेवल्स आर इंक्रीज्ड. पर्सिस्टेंट इंजूरियस स्टिमुलाई के कारण सेलेक्टिव परमेबिलिटी ख़त्म हो जाता है मेम्ब्रेन का, तो साइटोसोलिक कैल्शियम विल बी इंक्रीज्ड. मेम्ब्रेन डिसफंक्शन में पर्सिस्टेंट इंजूरियस स्टिमुलाई के कारण द मेम्ब्रेन विल lose its selective permeability. This will lead to increase in the cytosolic RNA. Phospholipase will be activated. Phospholipase break down the phospholipids, leads to membrane dysfunction and production of myelin figures. Phospholipase will break down the phospholipid. This leads to membrane dysfunction and formation of myelin figure. Phospholipase phospholipids को तोड़ देगा जिसके कारण membrane dysfunction होगा and myelin figures are produced. Endonuclease and DNAs, they cause DNA damage. Endonucleases and DNAs cause DNA damage. Proteases causes protein breakdown. ATPase के कारण ATP कम हो जाता है, ठीक है. तो साइटोसोलिक कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है. जो एंजाइम है फोस्फोलाइपेज, दिस विल डिस्ट्रॉय द फोस्फोलिपिड्स लीडिंग टू मेम्ब्रेन डिसफंक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन फिगर. डीएनए डैमेज होता है एंडोन्यूक्लिएजेस और डीएनएज के कारण. प्रोटीएज के कारण प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा. एटीपीएज के कारण एटीपी का लेवल कम होगा, ठीक है. तो फोस्फोलाइपेज के कारण फोस्फोलिपिड्स का ब्रेकडाउन होता है. एंडोन्यूक्लियस और डीएनएज के कारण डीएनए डैमेज होता है. प्रोटीएज के कारण प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है और एटीपीएज के कारण एटीपी का लेवल कम होता है. क्लिनिको-पैथोलॉजिकल कोरिलेशन. In diseases like MI or liver disease, enzymes can be measured in blood because there is membrane dysfunction and they leak out of the cell. तो MI या liver diseases में blood में enzymes डिटेक्ट होते हैं because membrane डैमेज होगा, membrane का dysfunction होगा और जो enzymes हैं they will leak out of the cell. In clinical disorders, in disorders like MI and liver diseases, enzymes are detected in the blood. Why? Because there is membrane dysfunction and the enzyme escapes out of the cell. Second characteristic was mitochondrial dysfunction. Mitochondrial dysfunction, large flocculent amorphous density. It is characteristic feature of irreversible injury. Large flocculent amorphous densities. Large flocculus amorphous densities, it is the characteristic feature of irreversible injury. Large flocculent amorphous densities only been seen on electron microscopy. Then nuclear changes. Nuclear changes, most important light microscopic feature. Nuclear changes are pycnosis, karyorexis and karyolysis. Pycnosis is the shrinkage or clumping of the nuclear chromatin or hyperchromatia. Pycnosis is the shrinkage or clumping of the nuclear chromatin. Karyorexis is the fragmentation of the nuclear chromatin. Karyorexis means fragmentation of the nuclear chromatin. Karyolysis is the dissolution of nucleus. Pycnosis is the shrinkage and clumping of nuclear chromatin or hyperchromatia. Karyorexis is the fragmentation of nuclear chromatin and karyolysis means dissolution of the nucleus. See, irreversible cell injury में there is lysosome rupture and autolysis. लाइसोसोम का रप्चर और ऑटोलाइसिस होता है. माइलिन फिगर्स मिलते हैं. माइलिन फिगर्स इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों टाइप के इंजरी में मिलते हैं. देयर इज लाइसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स होता है, मेम्ब्रेन डिसफंक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ irreversible cellular injury. माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होता है एंड लार्ज डेंसिटीज होता है, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ irreversible injury. Large flocculent amorphous densities. So these are the large densities, large flocculent amorphous density. It is a characteristic of irreversible cell injury. Then nuclear changes में pycnosis, karyolysis and karyorrhexis. Okay, तो irreversible cell injury में there is membrane dysfunction, large densities are found, there is mitochondrial swelling, nuclear changes include pycnosis, karyolysis, karyorrhexis. Myelin figures are seen both in irreversible and reversible. There is lysosome rupture and autolysis.